હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, પાછળના વિડીયોમાં આપણે જોતા હતા જે કોઈ પણ એસી ક્વોન્ટિટી આવે આ ટાઈપની, बराबर છે, अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म, उसके रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशन हमने देखी, बहुत सारी टर्म्स आती है, लाइक एम्पलीट्यूड हमने देखा, देन फॉर्म फैक्टर देखा हमने, पावर फैक्टर, फेज डिफरेंस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, साइकिल किसको बोलते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें ना इम्पोर्टेंट है। अब आज हम देखेंगे, ये आपका एक नेक्स्ट पेज है बुक का। अभी ये जो सिंगल फेस एंड थ्री फेस कनेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया ना, वो हमें नहीं करना है अभी, वो अभी टॉपिक आएगा तो हम डिटेल में देखेंगे उसका, राइट। तो ये आपको अभी नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ ये सारा पोर्शन। आज हम देखेंगे अभी सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज मीन्स श्रेणी और पैरेलल मीन्स समांतर। अब रेजिस्टेंस क्या है वो हमने देखा था। रेजिस्टेंस का काम क्या है, चलो पहले ये हम देखते हैं कि उसको डिनोटेट कैसे करते हैं। रजिस्टर जे છે એને આપણે દર્શાવીએ કેવી રીતે, તો કેપિટલ આર થી, બરાબર। એનો એકમ શું છે, યુનિટ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ ઓમ, એને આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ છીએ ઓમ, અથવા તો ગ્રીક સિમ્બોલ આ રીતના પણ આપણે એને કરી શકીએ છીએ ઓમ, બરાબર છે। ચાલો હવે આપણે સમજીશું પહેલાં તો કે રજિસ્ટર જે છે અવરોધક, એનો કામ શું છે, એ શું કરે છે। તો કોઈ પણ એક પરિપથની અંદર આવે તો એ શું કરશે, એમાંથી જે કરંટ પાસ થતો હશે ને, मतलब વીજ પ્રવાહ જે પસાર થતો હશે તો એને શું કરશે, રોકવાનું કામ કરશે, એને અવરોધવાનું કામ કરશે, એનું નામ જ છે અવરોધક, બરાબર છે। સો વોટ ઇઝ ધ फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, सिंपली टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। जो सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कितना करंट आई जितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको अपोज करने की ट्राई करेगा। अब देखो यहाँ पे हमने पूरा देखा था रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा, ये एरो में अप साइड कर रहा हूँ, मतलब रजिस्टर अवरोधकની કિંમત જેટલી વધારે એનું મૂલ્ય, એટલો કરંટ કેવો થઈ જશે, ઓછો। ઓકે, સમજ પડી। આપણે ઓહ્મ્સ લો પણ જોયું ને, V = IR, તો આપણે I લખવું હોય તો શું લખાશે, R ને અહીંયા નીચે લઈ જઈએ તો શું લખાશે, I = V/R। તો આપણે અહીંયા આરની વેલ્યુ આપણે વધારીએ તો આઈ કેવો થઈ જશે, આ વધારીએ તો રેસિપ્રોકલ છે ને, છેદમાં છે, તો આર મોટો હોય તો કરંટ નાનો થઈ જશે, અને આર નાનો હોય તો કરંટ કેવો થઈ જશે, વધારે। મતલબ જો રજિસ્ટન્સની કિંમત વધારે હશે તો કરંટ કેવો હશે, ઓછો, અને રજિસ્ટન્સ ઓછો હશે તો કરંટ વધારે। ચાલો, આ તો આપણે રજિસ્ટન્સમાં જોયું હતું। આજે આપણે જોવાનું છે એ જ રજિસ્ટન્સને સિરીઝ અને પેરેલલમાં કનેક્શન કરીને જોવાનું છે કે શું વોલ્ટેજ કરંટમાં શું ફેરફાર આવે છે, રાઈટ। એનો જે ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ છે તે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે। તો સિરીઝ પેરેલલ કનેક્શન કરવા માટે આપણને એકથી વધારે રેઝિસ્ટન્સની જરૂર પડશે। તો આપણે અહીંયા નોર્મલ આપણે બે પણ લઈ શકીએ, આ રીતના રેઝિસ્ટન્સનો સિમ્બોલ આ છે, બે પણ લઈ શકીએ, પણ એક તો ના લેવાય, બે લઈએ ઓછા, બહુ વધારે પણ નહીં લેવાના, કેટલા લેવાના, નંબર ઓફ 3 રજિસ્ટર્સ લેવાના, તો ઓછા પણ ના લાગે અને વધારે પણ ના લાગે। તો આ રીતના 3 રજિસ્ટરને કનેક્ટ કરી દેવાના સિરીઝમાં, શ્રેણીમાં થઈ ગયું, બરાબર। આ એક રજિસ્ટન્સ છે, એના એક છેડાને રજિસ્ટન્સના બીજા છેડા, બીજા રજિસ્ટન્સના પહેલા છેડા સાથે કનેક્ટ કરો, બીજા રજિસ્ટન્સના જે બીજો છેડો છે તેના જે ત્રીજો રજિસ્ટન્સ આવવાનો એના પ્રથમ છેડા સાથે, બસ શ્રેણીમાં ગોઠવાઈ ગયા। જો બુકની અંદર ફિગર આપી છે તેમાં આ રીતના બોક્સ દોર્યા છે, બરાબર છે। તો તમે એની જગ્યાએ આ રીતના સિમ્બોલમાં તમે ડ્રો કરો તો પણ વાંધો નહીં। ઓકે, ચાલો, તો આ થઈ ગયું સિરીઝમાં કનેક્શન। હવે આપણે શું કરીશું, અહીંયા હું તમને ફિગરમાંથી बताऊँ છું मेन। तो ये जो है ये उसको R1 बोला है, इनको R2 बोला है और इसको R3। तो ये 3 रजिस्टेंस है, कैसे कनेक्ट हुए हैं, सीरीज में। ओके,
मतलब श्रेणी में ये बधाने जोड़वामां आव्या छे। अब क्या करेंगे, ये तीनों का है ना, ये अभी पहला टर्मिनल हो गया, ये दूसरा। अब ये दोनों के बीच में हम क्या देते हैं, वोल्टेज, वी वोल्टेज हम कनेक्ट करते हैं, सप्लाई देते हैं। सो जब हम वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे तो ये जो सर्किट है उसमें से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, बराबर है। જ્યારે આપણે એક વોલ્ટેજ આપીએ છીએ સપ્લાય સાથે આ શ્રેણીમાં જોડાયેલા રજિસ્ટરોને જોડવામાં આવે ત્યારે આ પરિપથમાંથી શું પસાર થશે, વીજ પ્રવાહ। ओके, कितना करंट फ्लो होगा, तो देखो यहाँ पे बताया है आई, और उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अभी यहाँ से यहाँ फिर से यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो देखो आई जितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये जो है ना, ये रजिस्टेंस R1 है और उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा, बराबर। रजिस्टर R1 છે એના બે છેડા વચ્ચે વોલ્ટેજ કેટલો હશે, વોલ્ટેજ એટલે આપણે જોયું હતું પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ। તો રજિસ્ટન્સનો R1 જે છે એનો આ એક છેડો થઈ ગયો, આ બીજો છેડો, આ બે વચ્ચે વોલ્ટેજ કેટલો હશે, બરાબર છે। તો એ વોલ્ટેજને અત્યારે આપણે નામ આપી દીધું છે V1। એવી જ રીતે આ R2 છે એના બે છેડા વચ્ચે જે વોલ્ટેજ છે એનું નામ આપ્યું છે આપણે V2, વોલ્ટેજનો V અને રજિસ્ટન્સ R2 છે એટલે આપણે કહીશું V2। एवी ज रीते ये R3 जो है उसके अक्रॉस में वो उसके दो टर्मिनल हो गए ये, ओके। R3 के ये दो टर्मिनल हो गए, उसके बीच में कितना वोल्टेज है, तो नाम दे दिया V3। सो R1 के दो टर्मिनल के बीच में V1, R2 के अक्रॉस में वोल्टेज V2 और R3 के अक्रॉस में वोल्टेज क्या हो गया, V3 हो गया। अब देखो ये जो वोल्टेज है ना, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब ये तीनों का आप सम करोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो कितना आएगा, टोटल वोल्टेज मिलेगा हमें। टोटल वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं, V वोल्टेज ये तीनों रजिस्टर में डिवाइड हो गया है उसके अक्रॉस में, ठीक। चलो हमने तो ये सर्किट की बात की, ये सीरीज में कनेक्शन किया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट थिंग एक है, देखो ये कि ये करंट जो है वो यहाँ से पास होगा, ये R1 में से, R2 में से, R3 में से पास होकर यहाँ पे चला जाएगा। मतलब ये सिंगल पॉइंट आपको याद रखना है कि जब रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे श्रेणी में, ત્યારે કરંટ કેવો હશે, R1 R2 અને R3 માંથી પસાર થતો કરંટ કેવો હશે, સરખો હશે। બધામાંથી કેટલો કરંટ પાસ થશે, I। ओके, सो ये बात याद रखनी है कि सीरीज कनेक्शन के लिए सभी रजिस्टर में से करंट कैसा पास होगा, सेम ही पास होगा। लेकिन सभी रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज બધા જ રજિસ્ટર જે છે R1 R2 R3 અવરોધો એના છેડાઓની વચ્ચેનો વોલ્ટેજ કેવો હશે, અલગ અલગ હશે। ઓકે, મીન્સ वोल्टेज अक्रॉस ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस आर डिफरेंट। R1 के लिए V1 है, R2 के लिए V2 है, R3 के लिए V3 है। सो वोल्टेज कैसा होगा, सीरीज कनेक्शन होगा, तो ये सीरीज है, राइट, श्रेणी। तो श्रेणी कनेक्शन माटे करंट केवो हशे, बधामांथी R1 R2 R3 मांथी बधामांथी सरखो पसार थशे અને वोल्टेज R1 R2 અને R3 माटे केवा हशे, अलग अलग हशे। तो आ केम इम्पोर्टન્ટ छूँ, मैं केम वारंवार बोल्यो छूँ, कारण के आ थियरी इम्पोर्टન્ટ नहीं, पण इम्पोर्टન્ટ शुं छे, सीरीज अने पेरेलल वच्चेनो तफावत। आ बे वच्चे तफावतमां आपणे लखवानो हशे। आ एक बे पॉइंट आपणे जोई गया कहेवाय, बराबर। हूँ तमने पाछळथी बतावीश। चलो, तो ये बात हो गई अभी। तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज V कितना होगा, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 उसका समेसन होगा। तो वो हमें लिखना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। अब क्या यूज़ करेंगे हम, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में, मतलब ये पढ़ा था ना, R इक्वल टू ये V बाई आई। तो I को हम R के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR लिख सकते हैं, यानी। सो यहाँ पे ये V की, V1 V2 एंड V3 सभी की वैल्यू हम रखेंगे। समझ में आ रहा है कैसे रखेंगे, तो देखो ये कैपिटल V है तो ओम्स लॉ है तो IR लिखेंगे।
तो V इक्वल टू क्या लिख दिया आई आर। अब देखो ये V1 है, तो V1 के लिए क्या लिखेंगे आई। V1 क्या है, करंट तो सेमी पास होने वाला है रजिस्टर R1 में से। ये जो R1 है उसमें से करंट कितना पास होगा I, लेकिन उसका वोल्टेज कितना है V1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे I R1। ये V1 जो है वो किसका वोल्टेज है R1 का, करंट तो उसमें से I ही फ्लो होगा। तो क्या आएगा V1 इक्वल टू आई R1। सिमिलरली V2 लिखना है मुझे, तो क्या लिखूँगा, करंट तो सेम ही होगा लेकिन कौन सा रजिस्टर आएगा R2, आई R2। सिमिलरली V3 क्या आएगा, करंट तो R3 में से भी सेम ही पास हो रहा है R3। सो ये आ गया। अब देखो क्या करेंगे हम नेक्स्ट कि ये क्वेश्चन आ गया, कैसे है वो पता चला। ये सर्किट पे से हमने लिखा, यहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ किया। अब देखो राइट साइड यहाँ पे तीनों में ये जो आई है वो क्या है सेम ही है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई को बाहर ले लिया, तो जो भी बाकी रहा उसको क्या पे लिखना है हमें ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्या बाकी रहेगा R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे क्या बाकी रहेगा R3। ओके चलो, तो ये इक्वेशन आ गया एक। अब देखो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड आई है और ये राइट साइड दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लिख सकते हैं। गेटिंग। सो यहाँ से क्या पता चलेगा, ये इक्वेशन पे से देखो ये क्या पता चलेगा कि सीरीज रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मान लो ये तो R1 है, ये R2 है और ये R3 है, लेकिन मैं ये बोलूँ कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस को मैं क्या बोल दूँ R। ये तीनों का जो सीरीज है ना उसका टोटल को मैं क्या बोल दूँ R। उसको मैंने यहाँ पे बताया दूसरी फिगर में। देखो ये एक ही रेजिस्टेंस बताया, 3 की जगह पे क्या बताया, एक बताया टोटल उसका सभी का। ओके, तो वो R बताया है, R के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है V और उसमें से करंट कितना पास हो रहा है I। ये तो सेम ही है। चलो तो ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है R, और हमारे पास इक्वेशन क्या है, कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्ट हुए है, मतलब જ્યારે અવરોધકો શ્રેણીમાં જોડાયેલા હોય છે ત્યારે એનો ટોટલ રજિસ્ટર અવરોધક ઇક્વિવેલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ એ શું હોય છે, એ બધાના સરવાળા બરાબર હોય છે। ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ સમેશન ઓફ ऑल द रजिस्टर्स प्रेजेंट इन द सर्किट। सो सर्किट के अंदर 3 रजिस्टर हैं, कितने 3, R1 R2 R3, तीनों क्या है सीरीज में। तो तीनों का समेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रजिस्टेंस पता चला। सो आप इसकी जगह पे मान लो कि ये R1 हमारा 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। तो तीनों का क्या होगा 6 होगा, तो आग की वैल्यू क्या होगी 6। तो सेम मिलेगा हमें सब कुछ, ये इक्वल टू ये हो गया। देखो राइट। सो यहाँ पे क्या जरूरी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको आप कैपिटल R बोल रहे हैं। सो R इक्वल टू क्या आता है, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में है उसका સમેશન, मतलब જેટલા અવરોધકો શ્રેણીમાં છે એ બધાનો શું થઈ જશે સરવાળો। હવે એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે 3 જ લીધા, પણ 3થી વધારે હોય તો R1 પ્લસ R2 પ્લસ R3, આ કેટલો છે ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ। તો R3 વધારે હોય, ધારો કે ફોર્થ રેઝિસ્ટન્સ, R4 પ્લસ ડોટ 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 જેટલા હોય તેટલા બધાનો આપણે શું કરી શકીએ છીએ સરવાળો। अब यहाँ पे हमने कैपिटल V इक्वल टू आई आर लिखा है, वो कहाँ से लिखा है, ये फिगर से। देखो ये फिगर, ओके। V इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करंट I है और ये R है, ठीक। और ये V1 V2 V3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ से लिख दिया। सभी में से करंट सेम फ्लो हो रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आ रही है, चेंज हो रहा है। समझ में आया, बस ये मेन है, ये इक्वेशन ही हमें लाना था, सिर्फ ये सीरीज कनेक्शन हो गया। जैसे सो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है, मेन चीज़ कि
सीरीज में करंट सेम रहता है, सभी रजिस्टेंस में से पास होने वाला है, और वोल्टेज अलग अलग आता है, और टोटल रजिस्टेंस कितना आता है यार, ये सभी का समेसन, બધાનો સરવાળો. બરાબર છે. એટલે આપણા ડિફરન્સના 3 પોઈન્ટ આપણાથી થઈ જશે. બરાબર છે. આને શું કહેવાય છે? વોલ્ટેજ ડ્રોપ કહેવાય છે. આજે આપણે સર્વ કરીએ ને ગુણાકાર, IR1 V1 આપણે જે લખીએ ને IR1, આને શું કહેવાય છે? વોલ્ટેજ ડ્રોપ. કોના વચ્ચે વોલ્ટેજ ડ્રોપ થયો? કોના અક્રોસમાં? તો કે R1ના અક્રોસમાં. વોલ્ટેજ ડ્રોપ થવો મતલબ એટલો વોલ્ટેજ ઓછો થઈ જશે. બરાબર. ટોટલ વોલ્ટેજ આપણે V આપીએ તો V1 જેટલો વોલ્ટેજ કોણ લઈ લેશે? R1. V2 વોલ્ટેજ કોણ લઈ લેશે? R2. V3 વોલ્ટેજ કોને વચ્ચે આવશે? R3 વચ્ચે. મતલબ એ વોલ્ટેજ કેવો થતો જશે? ઓછો થતો જશે. બરાબર છે. ડ્રોપ કરી દેશે એટલો વોલ્ટેજ. એટલો વોલ્ટેજ એ લોકો સાદી ભાષામાં લે તો ખાઈ જશે. બરાબર, समझवा માટે આપણે એવું લખવાનું નથી એક્ઝામમાં. सो यहाँ पे लिखा कैसे है देखो, देर रजिस्टर R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज. मतलब કે R1 R2 અને R3 આ પહેલાં તો આપણે ફિગર ડ્રો કરવાની, પછી લખવાનું R1 R2 અને R3 અવરોધકોને શ્રેણીમાં જોડેલા છે. બરાબર. સેમ કરંટ ફ્લો થ્રુ ઈચ રજિસ્ટર. મેં તમને કીધું તેમ બધા જ રજિસ્ટરોમાંથી એક સરખો વીજ પ્રવાહ પસાર થશે I. Due to this current flow, there is voltage drop across each resistor, which is proportional to the resistance. શું લખ્યું છે કે આ કરંટ જે ફ્લો થશે, વીજ પ્રવાહ જે પસાર થશે, એના કારણે દરેક રજિસ્ટરના અક્રોસમાં શું થશે? વોલ્ટેજ ડ્રોપ થશે. અને વોલ્ટેજ ડ્રોપ કોના પ્રોપોર્શનલમાં હશે? રજિસ્ટન્સના. બરાબર છે. દાખલા તરીકે V1 ઇક્વલ ટુ આપણે લખ્યું ને IR1, શાના પર આધાર રાખે છે? આ R1 પર, એના પ્રોપોર્શનલમાં રહેશે. બરાબર છે. V2 ઇક્વલ ટુ લખ્યું છે આપણે IR2, અને V3 ઇક્વલ ટુ લખ્યું છે આપણે IR3. આ મેં તમને સમજાવ્યું છે કેવી રીતે આવ્યું છે. બરાબર. સો V1 V2 V3 એ શું થઈ ગયો? તમારો વોલ્ટેજ ડ્રોપ થઈ ગયો. R1 V1 ખાઈ જશે, R2 V2 અને R3 જે છે V3 જેટલો વોલ્ટેજને લઈ લેશે, ખાઈ જશે, એટલો ઓછો થઈ જશે, એટલે એનો ડ્રોપ કહેવાય છે. બરાબર છે. तो यहाँ पे और लिखा है सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, એટલે કે આ બધા વોલ્ટેજ ડ્રોપ છે V1 V2 V3 એ બધાનો સરવાળો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ અપ્લાઇડ વોલ્ટેજ V. એનો બધાનો સરવાળો કેટલો થશે? ઇક્વલ ટુ ધી આપણે જે V આપણે સપ્લાય જે આપીએ છીએ વોલ્ટેજ એટલો થશે. બરાબર છે. એનો મતલબ શું થઈ ગયો? આપણાથી આ લખાય, એના પછી આપણે આ લખવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો? લેટ ધ ઇક્વિવેલન્ટ रजिस्टेंस ऑफ ऑल दिस रजिस्टेंस बी आर. मतलब यहाँ से कि आ बधानो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस, मतलब आ त्रणनो जग्या આપણે એક લખવું હોય તો કેવી રીતે લખીએ? બધાનું આપણને નથી ખબર કે ભાઈ સરવાળો કરીએ તો આવશે, કે ભાગાકાર કરીએ તો આવશે, ગુણાકાર કરીએ તો આવશે. આ બધાનું બરાબર છે, શ્રેણીમાં છે તો તે બધાને આપણે ધારી લઈએ. બરાબર, કે ભાઈ કેપિટલ R એક છે એનો ઇક્વિવેલન્ટ રજિસ્ટન્સ છે. બસ, તો ત્યાર પછી આપણે આજે જોઈ ગયા એ આપણે લખવાનું છે. એન્ડમાં લખ્યું છે જો, એન્ડ વેન મોર રજિસ્ટન્સ આર કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ. આપણે આ ફિગરમાં જે બતાવ્યું પરિપથમાં કેટલા રજિસ્ટન્સ? ફક્ત 3, બસ એટલા બતાવવાના. પછી આપણે વધારે હોય 3થી વધારે તો કેવી રીતે લખી શકીએ? આપણે આ રીતે લખી શકીએ. બરાબર. ટોટલ રજિસ્ટન્સ કેટલો લખી શકીએ? બધાનો સરવાળો, મતલબ R1 પ્લસ R2 પ્લસ R3. 4 રજિસ્ટર હોય તો 4 રજિસ્ટન્સનો સરવાળો. એનાથી વધારે હોય તો R5 પ્લસ R6. આ जनरल फॉर्म, राइट. सो आ वस्तु तुम्हारे याद रखवानी है. समझ पड़ी? अब पावर लॉस कितना होगा वो यहाँ पे बताया गया है, P1 P2. अब वो कैसे पता चलेगा आपको? वो पावर लॉस वाला जो है ना, P इक्वल टू हमने पढ़ा था VI. अब V इक्वल टू आप रखोगे तो क्या आएगा? I² R आ जाएगा. राइट. ओके. लेकिन यहाँ पे रजिस्टेंस में ये सीरीज कनेक्शन में सेम रहता है, तो अभी पावर का भी मत हम देखेंगे नहीं. ओके. एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है. पावर P1 मान लो तो वो क्या आएगा? I² R1 आएगा. यहाँ पे I1 लिखा है लेकिन I ही आएगा क्योंकि करंट कैसा रहता है? सेम. P2 पावर जो है रजिस्टेंस R2 का क्या आएगा? I2² R2. बराबर. I2² नहीं आएगा, क्या आएगा? ओनली I² R2.
थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो यहाँ पे जो मैंने बताया वही यहाँ पे समरी दी हुई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पैरेलल देखेंगे, और उसके बाद वही वीडियो में हम उसका जो डिफरेंस है जो इम्पोर्टेंट वाला वो हम देख लेंगे। रेडी।